Hello बच्चों, so let's read this question. Mention any two limitations of freedom of speech and expression. So, freedom of speech और expression एक fundamental right है जो कि हमें Indian Constitution provide करता है. हमें उसके दो limitations बताने हैं इस question में. So, हमारा key concept हो जाएगा fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स. अगर हम बात करें अबाउट लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच and expression enables an individual to openly share his or her views with some reasonable restrictions. To openly share his or her views with reasonable restrictions. तो अगर हम बात करें इस वाले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, सो एंड इट provides freedom of expression also. So basically, it is an essential right in democratic country and it is granted by Article 19(1)(a) of the Constitution of India to the people of India. और इसमें हम लोग बेसिकली हम अगर मेन एलिमेंट्स की बात करें इस राइट की, सो इट दिस राइट इज ओनली अवेलेबल टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एट द सेम टाइम नॉट अवेलेबल टू फॉरेन nationals. Basically जो भी नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है उनके लिए ये अवेलेबल नहीं है. And the freedom of speech under 19(1)(a) includes the right to express one's views and opinions at any issue through the medium of his or her choice. It includes words of mouth, writing or printing, या फिर कोई भी मीडियम वो चूज कर सकते हैं to express their opinions and views. And अगर हम थर्ड की बात करें, this right is not absolute and it allows government to frame laws to impose logical restrictions on the basis of the certain areas such as interest of sovereignty and integrity of India and the security of the state, friendly relations with foreign states, public order, politeness and morality and contempt of court, defamation and incitement to an offense. So basically ये जो हमारा लॉ है ये बिल्कुल ही एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कुछ भी आप नहीं बोल सकते जाके. But by this law, freedom of speech and expression, we should not hurt others. We obviously know that. So government protects that. And this restriction of the freedom of speech of any citizen may be enforced as much as by the action of state and as much by an action of the state as by its inaction. So अगर हम इस लॉ के limitations की बात करें, so limitations of freedom of speech and expression will be सो पहला लिमिटेशन होता है वन कैनॉट hurt others, or we can say use this freedom. One cannot use this freedom to bring about violence against others. कोई भी लड़ाई झगड़ा हम इसकी वजह से हम इनिशिएट नहीं कर सकते या फिर हम कोई भी वायलेंट एक्शन दूसरों के लिए नहीं ले सकते अगेंस्ट दिस लॉ. सो दिस इज द लिमिटेशन वन, वायलेंस अगेंस्ट अदर्स. अगर हम बात करें सेकेंड लिमिटेशन की, so one cannot use it to provoke people to rebel against the government. So लोग दूसरे लोग को बहका नहीं सकते. बेसिकली इसका मतलब ये है कि this law can or this freedom cannot be used to provoke people to rebel against the government. Provoke people to rebel against the government.
और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, सो थर्ड पॉइंट इज वन कैन नॉट यूज इट टू इंसल्ट अदर्स। हम दूसरे का फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं हो गया कि हम दूसरों को इंसल्ट कर सकते हैं या फिर उनको हर्ट कर सकते हैं। सो वन कैन नॉट यूज दिस टू इंसल्ट अदर्स by saying false or mean things, saying false or mean things that cause harm to a person's reputation or status. Basically, हम किसी भी इंसान को कुछ भी जाके नहीं बोल सकते हैं that will hurt that person's reputation or status. Say that cause harm to one or to a person's reputation or status. So these are the limitations of the freedom of speech and expression. I hope you understood the question well. Best of luck.